17 days trapped in that Uttarkashi under construction tunnel. 41 workers are waiting to be rescued. Now we have an update. Could we see for them light at the end of the tunnel? With the rescue operations that are on, the latest update is that the rat mining operation has started. The rat miners have reached the location. They are conducting operations in full swing that has started. The rat miners have to cross about 51.5 meters mark. We are being told that it's under 10 meters to go. It's an extraction of the debris that's also underway. They collect that debris with the basic minimum that they possibly can, because it's a small passage in which the rat miners have to go through. The rescue team is now hopeful and depending massively on these rat miners to be able to hear some reports of an update. And this, remember, will be very important because this will reflect on what possibly can be done, and this is in some way manual drilling as well. They've gone very well last night. They've just crossed 50 metres. Let's say it's about 5 or 6 metres to go. They're just putting another pipe in, so we're expecting some good results later today. Sir, we have crossed 50 metres. It is very big achievement. It is, yes, very big. So how much left? We think probably another pipe 6 metres. 5-6 meters only left? Yes. So how much time it will take to reach 6 meters? It depends on the ground, but we haven't had any obstacles last night, and it's looking very positive sometime today. You're hearing of the term rat mining because the biggest machines, advanced machines, could not pass through. There was something that was blocking them. The blades were falling off, and now rat hole mining, which is basically to extract coal, for example, from narrow horizontal seams. It's prevalent in Meghalaya, for example, and that's why these are narrow pits. They are dug into the ground and typically just large enough for one person to be able to descend and extract coal, usually, is what we have seen this time, to clear the debris. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami is at the location. Remember, the Chief Minister has been making a constant visit to and fro to this Uttarkashi landslide. And remember, one of the biggest issues remains that the operations must continue for as long as possible because there's a Met Department forecast that it could start raining any time in that area. There is cloudy weather forecast. But as you just heard, international level experts have been brought in. They are also being taken advice from about what can be done. But for some strange reasons, even the biggest machines are not able to go through the under construction tunnel. You're looking at the visuals of Pushkar Singh Dhami with the administration officials, with officials who are involved with the rescue team. And when I say officials involved in the rescue team, there are, remember, many agencies. Not just government agencies, but there's ONGC, there's the highway authorities of the country, there is the NDMA, the Disaster Management Authority. All of these organizations have put their best resources to be able to bring out 41 Indians out. 41 Indians who want to be reunited, who were at work when the debris fell. And they have been trapped in that area for the past 17 days. It's not easy at all. Remember, for at least 10 days, they couldn't even be reached with the bare minimum food. There were some fruits and dry fruits being given to them and with water. Now they've started to be provided with meals, for example, chapati, dalia, fruits, dry fruits that have been given to them. So these are the visuals of the Chief Minister of Uttarakhand, who's currently back at that location site. But remember, it is a race against time. It's 17 days now. Auger machine has been removed. Process of manual rat drilling is currently underway to possibly try to save the trapped workers as soon as possible. Meanwhile, there is also vertical and horizontal drilling that is currently on. So how much more to go for them to come out? 42 meters of vertical drilling from the top of the Silkyara tunnel has been completed, but 44 meters to go more, which means over on the other side, 51 meters of horizontal drilling is completed, with about 6 to 7 more meters to go. Australian tunnel experts Chris Cooper has said that they are expecting a breakthrough soon. Prime Minister Modi on Monday gave out a public statement at one of the rallies in Telangana and said all agencies are working together, leaving no stone unturned to evacuate workers trapped in the tunnel.
ओवर बोरिंग मशीन में हम काम कर रहे हैं, उसी से पुशिंग हो रही है पाइप की। अभी चालू है। कटर की बहुत चर्चा है। कितना मीटर तक हो चुका है अभी तक? 50 मीटर। हम लोग पाइप के अंदर जा रहे हैं 800 डाया में, 800 mm पाइप में। अच्छा जी। और किस उसका यूज कर रहे हैं आप? हम हिल्टे का यूज कर रहे हैं, गुदाली का यूज कर रहे हैं, और भी कोई चीज मिलती है तो हम उसे भी यूज करते हैं, पंजी फावड़े सब यूज कर रहे हैं। मैनुअल प्लस पुशिंग वाला जो है ना, मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि काम स्टार्ट उसमें ये हो गया है कि क्लियर करते हैं हाथ से, तो मैनुअली हाथ से क्लियर करके उसको अगर कहीं भी दिक्कत आती है उसको मशीन से, अभी बीच में छोटे सरिये थे तो उनको काट दिया गया, तो इट विल वर्क लाइक दिस। जैसे थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन इसके अंदर कोई एक स्पीड, कोई एक समय सीमा, जैसे आप लोगों के फिर सवाल होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन लेट्स प्रे एंड लेट्स होप कि जितनी जल्दी हो सके उतनी कम कठिनाइयां है और हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको कर पाए। जहां तक कि हॉरिजॉन्टल बोरिंग की बात हुई, मैं बस एक दो चीज इतना ही ऐड करूंगा कि आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि 1.9 मीटर्स हमने पाइप जो आगे डैमेज था वो हमें कट करना पड़ा, तो अभी जो 0.9 मीटर्स है, हम मतलब 1.9 से सिर्फ 0.9 मीटर्स हमने मेकअप किया है। 6 मीटर जो अगला है, अनदर 1 मीटर करने के बाद, वो थोड़ा सा हमारे लिए चुनौती भरा होगा, और फिर हम उसको रिव्यू कर रहे हैं रेगुलरली। हम देख रहे हैं जो भी एक्शन लेना होगा हम लेंगे साइमल्टेनियसली, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम आगे बढ़ते रहें। काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। जो मेन हॉरिजॉन्टल अप्रोच हमारा सिल्कियारा से हो रहा था, सिल्कियारा एंड से हो रहा था, उसके अंदर जो फंसा हुआ मलबा था और फंसा हुआ टूटा टुकड़ा था जो हमारे ऑगर का, उसको हटा दिया गया है। बाकी जो ऊपर वर्टिकल वाला है उसमें कल 15 मीटर तक का डेप्थ हमको हासिल हुआ था, आज 30 से 32 मीटर हासिल हो गया है और उसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। Listening now to what Prime Minister Narendra Modi had said about the trapped workers and how all government agencies, all organizations have put in their best resources working round the clock to ensure these 41 Indian workers are brought out safe and alive. आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए, हम सभी की यही प्रार्थना है। So remember now, much of the focus will be, and many of us will be depending on the hope of the work of the rat miners, which is manual clearance of the debris, and that is moving very fast. Amit Bhardwaj is joining me for the latest on that. Amit, I don't want to unnecessarily say it will all happen today, but the manner in which the rat miners, who you also spoke to, are going ahead with their job. And remember, this is basic minimum equipment with which they have, but they are clearing the debris as soon as they can. Do tell us how that is the last phase of clearing to be able to bring out the workers. Well, Pooja, the main focus was always on the horizontal rescue tunnel that was being built from the Silkyara end, and the auger machine had gotten stuck, parts had gotten stuck in the debris, and that had caused a problem to the extent that entire machine-based rescue operation got derailed.
Now you have the rat miners technique workers working inside that rescue tunnel. We have been told by sources that 51.5 meter is the length that has been achieved so far, which means these workers who had gone inside are literally picking up the debris with their bare hands, putting it in the trolley, and it's being extracted from the rescue tunnel. So every time you are able to clear, let's say, 200 mm distance or a 500 mm distance, what happens is the machine from the other side of the tunnel pushes the pipe towards the area where the workers are trapped. So that's the technique it's being used. It's a unique method that has been put in place, manual plus machine, technology at place. Amit, keep tracking and keep updating us as and when you hear something from on the side of what's happening. Now, Amit Bhardwaj has spoken to the rat mining workers. It's a difficult job to do. And why they are doing it, how they are planning to do it. Listen in to this exclusive conversation. ये बताइए, जो प्रोसेस है पूरा, आप लोगों का अंदर जाएंगे, बड़ा कठिन परिस्थिति है, किस तरह से काम करेंगे वहाँ पे? मतलब जो एक फावड़ा लेके जाएंगे छोटा सा, जिसके लिए एक ठेली की जरूरत पड़ेगी। ठेली के उससे मतलब तसले में रख के उसका मिट्टी आएगी बाहर निकालने के लिए। कितना बड़ा तसला रहता होगा वो, कोई आइडिया है क्या? 14 इंच का। 14 इंच का? हाँ जी, 12 इंच का चलेगा। अच्छा, मतलब 800 का लाइन है। हाँ। इसलिए कोई बड़ा पाइप होता तो मतलब बड़ा तसला ले जा सकते। तो एक बार में कितना मलबा तकरीबन आप उसमें रख पाएंगे, कोई आइडिया है अभी? एक तसले में 6-7 किलो बनेगा। और कितना बनेगा? 6-7 किलो। तो इसमें कई घंटों का काम है। ये देख रहे हैं आप, है ना? और अंदर सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए क्या कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह जाएगा, कैसे होगा वो? मतलब उसमें जैसे क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन सब मास्क लगा के जाएंगे। चश्मा भी मतलब रखेगा आंख पे। हाँ। और इसके बाद एक ब्लोवर होता है जो पाइप के द्वारा हवा भी जाएगी उसके साथ साथ, ताकि धूल ना आए। अच्छा, हवा का सर्कुलेशन बना रहे। हाँ, ठीक है। और साथ में मैं ये देख रहा हूँ ड्रिलर आपने रखा हुआ है, ये किस काम में आएगा? ये मतलब कोई पत्थर अगर बड़ा सा आता है मुंह पर पाइप के, तो इससे अगर टूटता है तो इससे तोड़ा जाएगा। अच्छा, आप लोगों को क्या इसके पहले भी एक्सपीरियंस है, कहीं किया है आप लोगों ने, या पहला समय होगा जब ये काम करेंगे? नहीं, ये काम तो हम लोग काफी सालों से कर रहे हैं। इसका एक्सपीरियंस है, हम लोग कर देंगे, इतना है तजुर्बा। अच्छा। हाँ। तो कहाँ काम किया इसके पहले, किन जगहों पे? दिल्ली में बहुत सारे जगह पर किए हैं, गुजरात, अहमदाबाद में भी बहुत काम किए हैं। लेकिन ये चुनौती भरा होने वाला है, यहाँ पे सांस लेने की दिक्कत होगी अंदर तक। वो तो हम अपना सेफ्टी लेके चलेंगे। अच्छा। 6 लोगों की टीम जो जा रही है वो किस तरह से काम करेंगे? वो क्या शिफ्ट में काम होगा? कौन तोड़ेगा, कौन मलबे को खींचेगा? इसमें 2 आदमी हम पहले जाएंगे, जो तसला भर के ट्रॉली पे रखेंगे। ठीक है। बाकी 4 जने खींचेंगे। अच्छा। वो थकेंगे, फिर हम लोग 2 जाएंगे, अल्टरनेट करके जाएंगे। शिफ्ट में काम? हाँ, शिफ्ट में काम करेंगे। अच्छा, एक आखिरी चीज, क्या आप लोगों को भी वो लग रहा है कि 41 मजदूर 16 दिन अंदर फंसे हुए हैं, तो काम होता ही है, बाकी जगह पे करते हैं, लेकिन ये काम जब करने जा रहे हैं तो उस वक्त क्या अलग फीलिंग है? हाँ, मजदूर है, हम भी मजदूर हैं, उनको निकालना हमारा काम है। वो आ जाए तो हमारा भी दिल भरा हो जाए। अच्छा, तो आप लोगों को भी लग रहा है कि अपने ही भाई जैसे अंदर फंसे हुए हैं? हम भी वर्कर हैं, वो भी वर्कर हैं। हाँ। कभी हम भी फंस जाए तो वो भी निकाल सकते हैं। बस यही है। So while there are rat miners who have conducted and are conducting operations, what is this horizontal and vertical drilling that are simultaneously on? Let me help you explain. You're looking at this illustration that we've prepared for you. Now, for example, let's begin with the horizontal drilling, which is from the Silkyara end of the tunnel, where precisely the collapse had happened. You can see that there 50 meters have been drilled already. So there are few more meters to go that they are trying to go through, and that's where the problems have happened with the machines. They have to reach and clear that debris to be able to reach out to the trapped workers, but there are enough meters and right now that are still very difficult to be able to drill through. Now, this is the horizontal drilling that is on, and in the next few hours, this is where most success has been seen right now, and a good news is expected very soon. Then there is the vertical drilling. Vertical drilling clearly means from on top of the tunnel and through the mountain. They have gone through 42 meters have been completed. 44 meters are to go.
So this could take 4 days or about 100 hours in total. This could take longer. So a lot of hope will then be depending on the horizontal drilling, where about 10 meters have been left. That is where the rat miners are also conducting operations that you can see, and that is where they are trying to clear the debris. Now remember, amid all of this, it will be pertinent that whether it is horizontal drilling, vertical, all options are being explored right now. But it is the families, the victims who are currently trapped and their families that are currently out. They are waiting to be reunited. They are praying constantly. They are there at the site. We spoke to them. Here's what they said. Ankit Kumar's wife breaks into tears while sharing her concerns about the well-being of worker trapped in Uttarkashi tunnel since November 12th. She says her daughter keeps asking when her father will return home. All she can say is soon. एक दिन बात हुई थी, बोल रहा था कि हम लोग सब बढ़िया है, खाना पाना मिल रहा है, आप लोग बढ़िया से रहो, खाना वाना खा ले, बस. Other than Ankit, 5 others from Motipur in UP Shravasti district are among the workers awaiting rescue. Satyadev's family says that he went to work in Uttarkashi project for better pay. He earns roughly 25,000 rupees a month. वहाँ से डेली रोज शाम सुबह 2-2 घंटा 3-3 घंटा पर वहाँ से खबर आया करता है. हम लोग खबर लेते हैं, वहाँ सब मिलता है. Satyadev's son came home from his hostel after the tunnel collapsed. Speaking to Divyanshu from the tunnel, Satyadev advised him to return to school, but the son has chosen to stay back. हाँ, उस दिन फोन किए थे वहीं पर, जब बताया कि कैमरा लग गया अंदर, तब फोन किए थे. कह रहे हैं सब ठीक है, यहाँ पे खाना वाना सब मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है. The whole village is in shock. Satyadev's neighbor Ram Milan is also among the trapped workers. इस साल पर मेरी तबीयत खराब है. कब से तबीयत खराब हो? 12 तारीख से. चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ. यही बोलना चाहती हूँ. As rescue teams work on 2 safe passages in Uttarkashi, the families of trapped workers are hoping that they will get good news from Silkyara soon. With Santosh Kumar, Bureau Report, India Today.